स्टार्ट कर पाऊं। सी, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल में जो वर्किंग देखी, मैक्सिमम मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक के आसपास रखा था, राइट? कि क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट? आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्यूबिक या फोर्थ पावर या पॉलिनोमियल के और भी अधिक पावर्स होंगे, फिफ्थ पावर तक जाने की कोशिश करेंगे, राइट? सो इन पावर्स में क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम होंगे एंड उस पर कैसे वर्क करना है, एंड ये जैसे हमारे को एक कंफर्टेबल हो जाएगा, देन विल गो फॉर, राइट, पॉलिनोमियल फॉर रैंडम पावर्स। दे विल नॉट गिव यू द व्हाट पावर इट हैविंग, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज फेमस क्वेश्चन, राइट? सबसे फेमस क्वेश्चन में एक है ये। इफ fx is the polynomial of degree 3, what is the meaning of this? fx is the polynomial of degree 3. Hmm? क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पावर थ्री है। सर क्यूबिक है। एंड साथ ही साथ दिया whose leading coefficient is 1. What is the meaning of this? मॉनिक पॉलिनोमियल, यानी Monic कि जो polynomial. x टू द पावर 3 होगा उसमें 1 x टू द पावर 3। वेरी गुड। मतलब x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट विल बी 1 ना। कहीं कहीं पर, वेरी गुड सात्विक, मोनिक भी नाम दिया जाता है, राइट? राइट, मोनिक पॉलिनोमियल और डिग्री 1, right? If f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 6, right? Find f of 4. 3 को 6 मैंने कर दिया, 9 कर देता हूं। बात तो एक ही है, बट राइट, तो मैं डील करके दिखाऊं। सर 16। नो सर, नो सर। वेरी गुड। फर्स्ट आंसर 16, जो कि गलत हाँ सर, है आंसर। वो तो ट्रायल एंड एरर किया सर। सर मैंने करा हुआ है ऑब्वियसली। ये वही वही सबसे बड़ी वाली गड़बड़ यही होती है इसमें ना। वो दिखने में लगता है 16, और 16 ऑप्शन तो जरूर में रहेगा। नहीं सर, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वेरी गुड, बनाए। मतलब यहां जो गिवन है, वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, सर सर मैं सॉल्व। ओके वेरी गुड, ये, एंड द वैल्यूज आर गिवन, राइट? 1 2 3, देन जस्ट वी हैव टू थिंक कि सर बस क्लिक करने के बाद है, बाकी तो इतना कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। मैंने भेज दिया। इसमें तो बहुत वेरिएशन होते हैं बेटा, बहुत वेरिएशन होते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट वेरिएशन जो स्टार्ट किया हूं उसके लिए है कि लाइक 2 मार्कर ही क्वेश्चन जाएंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। परफेक्ट, वेरी गुड राघव। सी, कैन आई स्टार्ट? सर 1 ओके ओके, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, राइट? एंड इस पे मैं कम से कम 10 डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चंस में करवाऊंगा, सो प्लीज बी केयरफुल, राइट? एंड जितने वेरिएशन होते हैं वो पूरे वेरिएशन मैं कोशिश करूंगा। ओके, शुड आई स्टार्ट नाउ? नो सर, जस्ट सेंडिंग द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। All the 3 equation you have solved, then you are getting this कि if 1 पर you are getting
1 plus a plus b plus c is equal to 1. For 2, this is 8 plus 4a plus 2b plus c is equal to 4. And for 3, this is 27 plus 9a plus 3b plus c is equal to 9. Then you have to solve all the three equations, solve 1, 2, and 3. Then you are getting this, right? This is one of the method, but don't use this. बिग नो टू दिस इक्वेशन, राइट? क्योंकि मैंने तो बहुत ही छोटा दिया ना, 3 के लिए दिया, अब ये 4 5 के लिए होंगे तो वी आर नॉट एबल टू, लाइक वी आर एबल टू डू दैट, बट वो करते करते टाइम इतना लग जाएगा, वी आर नॉट एबल टू मैनेज दिस, राइट? सो ध्यान से समझना ना क्या हो रहा है और कैसे आपको निकालने हैं। अब मेरे पास गिवन है f1 इज 1, f2 इज 4 और f3 इज 9, राइट? तो हम लोगों ने अपने तरफ से एक, राइट, मैं शुरुआत से ही कोशिश करता हूं एक फंडामेंटल आपके बना के रखूं, इसलिए मैं एक फंक्शन दे रहा हूं gx। एंड व्हाट इज दिस gx मैंने कहा, राइट, ये तीनों नंबर्स मेरे पास गिवन है, x -1, x-2, x-3, राइट? सो क्या पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हो? तो मुझे करना क्या है कि gx एक ऐसा फंक्शन लेना है जो fx माइनस जो भी हमारे पास गिवन है नंबर्स, राइट, राइट, ये मुझे निकालना है, राइट? ऐसा नंबर निकालू या क्या नाम दे दो इसको, कोई px, राइट, px ऐसा नंबर निकालना है कि ये 0 हो जाए फॉर 1, 2 एंड 3, राइट? कि 1 रखने पर 0 हो जाए, 2 रखने पर 0 हो जाए। बाई ऑब्जर्वेशन वी कैन डू, राइट? हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान दो ये px निकालना है तो एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सा तरीका आपको बता, व्हाट यू हैव टू डू, दिस px इज, राइट, L1 x-2 x-3, राइट, प्लस L2, मैंने x-2 ये 1 वाले को छोड़कर 2 3 को माइनस किया, राइट? तो L2 जब ले रहा हूं तो व्हाट आई हैव टू राइट, x-1 x-3, L3 लिखूंगा तो क्या लिखना है मेरे को, कैन आई राइट दिस, राइट? फायदा क्या होगा इससे, राइट? ये जो मेरे गिवन है f1, राइट, f1 पर दिस वैल्यू विल बी 1, तो इस f1 के लिए जो 0 होना है तो मैं p1 को भी चाह रहा हूं कि वो 1 ही आ जाए। अगर मैंने 1 पुट किया, x इज इक्वल टू, राइट, p1 इज 1 पुट करने पर L1 व्हाट दिस 1 - 2 इंटू 1 - 3, और ये दोनों तो 0 ही होंगे, राइट? तो L1 मेरे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ P1, बट P1 मेरे को क्या चाहिए, राइट, सेम कसम 1 चाहिए, तो 1 के लिए L1 की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस 1/। पहले इसे समझ लो, क्या ये कंफर्टेबली दिखाई दे रहा है क्या हुआ? Sir, I did not understand from the GX part. सी what I am doing now, see this carefully, fx is given as 1 square for 1, f2 is 2 square, or f3 is 3 square. Is this okay? By observation, can you see this, Yes, sir. right? So what I'm saying, I'm assuming 1 gx, and this gx is fx minus x square, right? This gx is fx minus x square, right? What does this fx minus x square means? Can I say what is the value of g1 in this case? Zero. Very good. What is the value of g2 in this case? Zero. Very good. What is value of g3 in this case? Zero. Zero. Means 1, 2, and 3 are the roots of this gx. Can I say this? Yes, sir. Since the leading coefficient is 1, so can I write this as x minus 1, x minus 2, x minus 3? Yes, sir. So can I say fx is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus x square? And you have to find value of f4, 4 minus 1, 4 minus 2, 4 minus 3 plus 4 square.
4 minus 1 3 into 2 into 1 plus 16 16 plus 6 22. Very good. Right. सर आप माइनस एक्स स्क्वायर कैसे है बता सकते हो? बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हो बेटा, पहले में भी एक्स स्क्वायर माइनस करने से जीरो हो रहा है, दूसरे में भी एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है, मैं अभी बताऊंगा उसे, बट ये जो हमारे पास जीरो है। सर gx is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 कैसे आया? सिंस gx जो मेरे पास है 1 पे जीरो हुआ, मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। 2 पर जीरो हुआ मीन्स x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। 3 पर जीरो हुआ मीन्स x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट, राइट, x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। एंड क्योंकि हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स मेरा क्यूबिक इक्वेशन था, तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी क्यूबिक इक्वेशन होगा, राइट। तो जीएक्स जो मेरा है वो क्यूबिक इक्वेशन है, एंड तीन के तीन आ चुके हैं, राइट। लेकिन एक यहाँ पंगा ये फंस सकता था, लीडिंग कोफिशिएंट। बट कैन यू सी दिस, लीडिंग कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं इसमें, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्वेश्चन में गिवन था 1। सो आई एम सेइंग कि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, वो 1। इज दिस ओके? यू अंडरस्टैंड? ओके एवरीवन, राइट? Yes. So same question I am giving you. Okay everyone? Okay Shreyaj, Samil, यस सर। गुड इवनिंग सर। राम। हम लोग क्या कर रहे हैं? बस बेटा लिखा था, देख लो, पॉलिनोमियल्स। हाँ, पॉलिनोमियल्स में ही फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, देखना अभी थोड़ा सा फिर से मैं इसी क्वेश्चन को दे रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन, राइट। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसे सॉल्व करने के लिए तरीका हम लोग को थोड़ा सा और अलग करना पड़े, राइट। ये मैंने डिग्री जो है, इस बार जान ध्यान से देखना ना, अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसे ना। इफ एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 whose leading coefficient is 1, if f1 is 1, f2 is 2, f3 is 3, f4 is 4, f5 is 5, find f6. सिक्स। That's wrong. First answer could be 6 and that's wrong. We have two methods we are going with. First, we are going with the observation, right? We have to assume power. Very fast, Raghav. Very fast. Very good. शिवांग, नॉट बैड। थोड़ा सा एक बार फिर से सोचना बेटा, इधर प्लस और माइनस। यस यस, वेरी गुड। सो दिस इज द ट्रिक, राइट? एवरी टाइम। वाह सात्विक, वेरी गुड, गॉट दिस ट्रिक। अभिनव, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं, अनुष्का, रील, अमोक, अक्षय, नंबर से अक्षय कैसे कर रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ। एकदम सीधा आएगा। आर्यन, प्रसन्न, Sir, is my answer correct? यस परफेक्ट। ईसा, रिधिमा, रिधिमा इतना तो टाइम लग ही नहीं सकता। फास्ट फास्ट फास्ट, धवल, ओम। नहीं, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। सी मैं ये उज्जान के लिए पूरा काम कर रहा हूँ। उज्जान, सी दिस केयरफुली। सी F1 इज 1, F2 इज 2। ये पूरे से मेरे को एक ऑब्जर्वेशन आ रही है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्स, एक्स को इक्वलिटी दिख रही है, राइट राइट। एंड एफ एक्स जो मेरे पास गिवन है वो पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का, मतलब x टू दी पावर 5 सबसे बड़ा नंबर इसमें आ रहा होगा, और उसका कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, ये भी मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, राइट। मैं एक अपनी तरफ से पॉलिनोमियल जी एक्स रख, और जी एक्स को मैंने क्या बोला, तुम हो जाओ एफ एक्स माइनस 1। क्यों ऐसा?
क्योंकि fx-1 लेने से मेरे को क्या फायदा हो रहा है कि राइट आई कैन राइट डाउन g1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g1? f1-1 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g2? राइट f2-2 वो भी 0. f3 g3 f3-3 0. g4 0. g5 0. इज दिस ओके? Yes, sir. वाह, वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड जील. राइट, तो ये 5 वैल्यूज तो मेरे को मिल गए कि ये 0 हो गया. अगर 5 जीरोज है मतलब डिग्री 5 के ये 5 रूट्स होंगे. अगर ये 5 रूट है मतलब ये 5 फैक्टर आने चाहिए अलग अलग. कौन कौन से फैक्टर आएंगे? तो gx या fx-x दोनों एक ही बात है. राइट, मैं gx बोलूं या fx-1 बोलूं. एंड इसके फैक्टर्स है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5. राइट, सो fx मेरे पास होगा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 प्लस x. राइट, पुट वैल्यू ऑफ क्या चाहिए था मेरे को? f6. 5 पर तो 0 ही था. राइट, f6. 6-1 5 4 3 2 1 plus 6 120 plus 6 is 126. Is this okay? Yes, sir. Very good everyone. विजय, माइनस क्यों कर दिया बेटा? प्लस ना. हाँ सर, वो लास्ट में गलती से कर दिया। कैमरा क्यों ऑफ है तेरा? सर वो थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, राइट. अब इसमें काफी वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन. तो अभी तक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैं करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. राइट, सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये डिग्री जो हमारे पास था, दो चीजें यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं. ये डिग्री 4 में कर दिया. एंड लीडिंग कोफिशिएंट जो है 1 की जगह मैंने 2 कर दिया. लाइक लीडिंग कोफिशिएंट इज राइट x⁴ का कोफिशिएंट. राइट, एंड f0 की वैल्यू 1 है, f1 की वैल्यू 3 है, f2 की वैल्यू 5 है, f3 की वैल्यू 7. राइट, फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ 5 ही रख देता हूं. वाह, राघव, वेरी फास्ट, वेरी गुड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. कुछ मिसप्रिंट हो गया है उसका, एक बार फिर से देख लो. अच्छा, डन. सर अभी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड. शिवांग, वेरी गुड. रिद्धिमा, चेक योर कैलकुलेशन. वाह निमित, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट. सात्विक, चेक कैलकुलेशन बेटा. अभिनव, अभिनव, आंसर. सर इसमें आंसर करें।
Hmm. Yes, something is missing. I guess you have not written the multiplication part with the number. Simil, check again, beta. सर सही है क्या? बहुत कुछ माइन्यूट गड़बड़ हो गया अक्षर। मैं देखूं, अटेम्प्ट तो करीब करीब सबके हो गए हैं। सी, दिस नंबर एक इज मिनट सर। ओके। अक्षर, सर जस्ट अभी देखा, मैं वापस टाइप करने वाला था। But I've found a pattern, but I'm not able to frame the equation. सी, so I'm taking gx is equal to fx minus 2x minus 1, 2x plus 1. In fact, minus sign I'm taking before the bracket. Is this okay, Simil? Right? Yes. This having four roots. What are the roots? What are the roots? X minus 0, x minus 1, x minus 2, and x minus 3. Can I say this? Yes, I'm taking x minus 1, x minus 3, x minus 5. Why? Sir, I got confused. Okay, now it's okay now. See, this will giving you 1 at x is equal to 0. This is giving you 3 at x is equal to 1. This will give you 5 at x is equal to 2, and this giving you 7 at x is equal to 3. So this is my equation. So fx I can say is x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus 2x plus 1. Is this okay? सर Now, पर उन्होंने कहा था कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, तो right, fx is equals to 2x into x minus 1 x I minus have 2 to है ना? multiply 2 also for leading coefficient 1. This is right. So 2 into this thing, right? And what I have to what I have to find? 5 na? F of 5. 5, yes sir. 2 into 5 into 4 into 3 into 2, right? Plus 10 plus 1, right? 240 plus 11. Wow. Wow, wow, वो wow. मैं 2x कर दिया गलती से, इसलिए मेरा हाँ, देखा मैंने। तो दिस इज ओके। सर मैंने मैंने 5 को भी रूट मान लिया, इसलिए गलती हो। डिग्री तो 4 था ना? हाँ 5। सर, नहीं, मतलब मुझे एफ ऑफ 5 को भी मैंने मान लिया कि इसके वैल्यू 9 है। ओके, सो दिस, हाँ, तो ये 0 हो गया, सो यू आर गेटिंग 11। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, 0 से इस बार स्टार्ट किया, राइट? सो ये एक ब्यूटीफुल पोर्शन है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, राइट, पॉलिनोमियल्स के। बट व्हाट आई वाज सेइंग, इज दिस ओके एवरीवन? अगर ठीक है तो मैं थोड़ा सा इससे कंसेप्ट को आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। ओके, ओके एवरीवन, राइट? सी, सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे, उसमें सबसे अच्छी बात क्या रही कि इसमें हमारे पास जो भी हमने दिया, चलो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के साथ 3 में ही रखता हूँ, राइट? हमने दिया F11, F22, F33, F44, राइट? तो वी कैन सी दिस कि ये डायरेक्टली पैटर्न है कुछ ना। उजान ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ता हूँ ना। पैटर्न है। अगर मान लो ये पैटर्न में लॉस्ट कर, राइट, और एक कुछ ऐसा आ जाए जो हमारे लिए, आई गेस शायद मेंटली पकड़ना मेरे को दिक्कत हो। F1 की वैल्यू 5 है, F2 की वैल्यू 3 तो शायद हो सकता है 1 है, और F3 की वैल्यू मेरी 6 है। सर अगर जो इक्वेशन है वो सर्ड्स के फॉर्म में दिया, जैसे √3x² हो, वैसे तब हम कैसे करेंगे? चलेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सर एफ ऑफ क्या है? 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। हाँ, राइट। F1 इज इक्वल टू 5, F2 इज इक्वल टू 1, F3 इज इक्वल टू 6। याद है ना राघव ये?
ना, हाँ तो सर। कोफिशिएंट भी मेरे को गिवन है, राइट। अब इस पे वर्क करने के लिए है तो वही तरीका, लेकिन उसको ना एक लैंग्वेजेस ने एक बहुत प्यारा सा मेथड दे दिया इनके। उसके बाद होता है क्या है ना, कि अगर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी ना, तो होगा क्या, कुछ भी क्वेश्चन इसका रहे हम बोलेंगे अरे ये तो सिंपल है, राइट, आई एम एबल टू डू दैट। तो पहले पुरानी जो कंसेप्ट अभी बताया वो आई होप सबको क्लियर है। तब मैं इसको आगे ले जाके आपको फॉर्मलाइज कर रहा हूँ कि आज के बाद कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, तो यू कैन से कि ना 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 ये तो आता है, कोई दूसरा क्वेश्चन, राइट। कि ये क्वेश्चन आपको 100% इंक्लूड, मैंने पहले भी बोला आईआईटी कर लो या अपने ओलंपियाड्स कर लो, ये अलजेब्रा पे क्वेश्चन एक ऐसा जगह है जो हमेशा बनने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, राइट। सो सी see this, right? So f1, f2, f3 means the factors we have to see for x minus 1, x minus 2, and x minus 3, right? And obviously 1, 2, 3, this is given, right? So what we are saying, हमें लेना वैसे ही है gx को, जो fx माइनस कुछ एक फंक्शन हो जिसपे, राइट, मुझे मिल जाए कि at 1 this will be 0, at 2 this will be 0, at 3 this will be 0। तो यहाँ ये वाले में जो ब्रैकेट के अंदर है, उसमें मैं क्या फंक्शन लूं और कैसे उस फंक्शन को डिसाइड करूं, तो उसके फंक्शन की डिसीजन हो, राइट, जिसको मैंने पहले भी नाम दिया था पीएक्स। पीएक्स चलेगा नाम, राइट। तो यहां पर क्या हम लोग रखें, कैसे पता करें, उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैंने कहा एक है L1। L1 इज ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 -2 √2 √3 √5 √2 + 1 कुछ भी हो सकते हैं L1। एंड इसके साथ में ये तीन जो हमारे पास फैक्टर हैं, किसी दो दो को लेते जाते हैं, राइट। तो चलो पहले 1 2 को ही ले लिया, राइट। फिर L2, 1 3 को ले लिया हूं, मतलब हटा चुका हूं, तो 2 को हटा दिया, और L3 x-2 x-3, ये मैंने लिखा। सही है। मेरा मोटिव क्या है, राइट, मेरा मोटिव क्या है ये पूरे को करने का, उसको ख्याल रखना। मेरा मोटिव ये है कि P1 की वैल्यू को मुझे 5 लाना है, P2 की वैल्यू को मुझे क्या लाना है, P2 को 1 लाना है, एंड P3 की वैल्यू को मुझे क्या लाना है, 6 लाना है। ये तीन वैल्यूज को मुझे कैसे भी घुमा फिरा के लाना है, राइट। राइट, मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं कि P1 P2 एंड P3 मेरे को गिवन है, जो ये होने चाहिए, राइट। अगर L1 L2 L3 निकल गया तो मैं यहां पुट कर सकता हूं, राइट। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरी प्लानिंग ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने x को 1 पुट कर दिया, 1 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, L3 मेरे पास आएगा, राइट। 1 पुट किया अगर मैंने, दोनों साइड ही 1 पुट होगा, तो P1 की वैल्यू क्या थी, 5। 1 पुट किया तो ये दोनों नंबर मेरे पास क्या होंगे, 1 -2 इज -1, 1 -3 इज -2, 5/2 L3 की वैल्यू। L2 क्या होगा निकाल के बताओ, L2। सर 2, L2 सर, L2 2 है। L2 1 आ गया, राइट। P2 1 है, और 2 रखूंगा तो 2 -1 -L2। 1, and this is -1, तो this is -1, -1 ना, -2 सर। सर 2 होगा ना, 2 = 2, x की वैल्यू। अच्छा हाँ, -1 है। ठीक है ना, -1। जल्दी से L3 देख के बताओ क्या है, व्हाट इज L3, सर ये नहीं समझ आया। कहाँ पर बेटा, सर L3, L3 और L2 कैसे निकाला? L3 देखे, L3 निकाल के, हाँ ये जो इक्वेशन मेरे पास है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये समझ में आया क्या लिया हमने, हाँ ये Sir, I didn't understand तो please. L3 की वैल्यू 3 आ रही है। अभी थोड़ा सा 2 मिनट दे दो, एक बार कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार कर लू ना। PX, ये दिस इज ओके, सिमिल, PX I have taken, this is okay, No, sir, I didn't understand how that came. PX, see, we have taken GX is equal to FX minus this is okay, the Yes, first, right? yes. So now I have to define this one means ye, what I have to subtract, this we have to define. So that I have given the name PX, okay. A PX को what I'm saying कि we have three factors, x -1, x -2, x -3. So what I'm saying कि I'm taking product of two at a time, right?
with some constant. So px I'm writing L1 into this factor plus L2 into this factor, L3 into two factors. Right. Every time I'm removing one factor. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Now I have to find value of L1, L2, and L3. Right. Lagrange's identity for L1, L2, L3. Right. So what we have seen कि P1, अच्छा, okay, understood, sir. right? P1 की value 5, P2 is 1, and P3 is 6, right? So both side I'm putting 3. L3 निकाल रहा हूँ 0, right? So both side I'm putting x is equal to 3. दोनों side put करूंगा तो P3 की value क्या है? P3 is equal to first वाले में रखूंगा तो L1 3 minus 1 3 minus 2 और दोनों तो 0 ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों में 3 के फैक्टर्स हैं, right? So 3 minus 1 is 2. So, and this is 6. 6 is equal to L1 into 2. L1 की value आ गई 3. Is this okay? Yes, sir. Now, so Px क्या है मेरा? So Px is 3 times of x minus 1, x minus 2. L2 is minus 1 time of x minus 1, x minus 2 plus L3 is 5 by 2 times of x minus 2, x minus 3. राइट, ये है मेरा पीएक्स. आराम से देखो एंड फील फ्री टू डिस्कस. खूब अच्छे से डिस्कस आप कर सकते हो. पहले इसको समझ लिया, हमारे हर एक क्वेश्चन को क्रैक करना इज सिंपलेस्ट थिंग. सर -1 x-1 x-3 होगा ना? सेकंड वाले में हाँ बेटा, ये सेकंड में 3. ओके, so now I can say gx is equals to what? Fx minus under bracket 3 times of x minus 1, x minus 2 minus of x minus 1, x minus 3 plus of 5 by 2 x minus 2, x minus 3. And this must be equals to what? What? 0. What means this having the factors now? So factor at 1, 2, and 3. Can I say this? Yes, sir. Right? So fx is equals to, this is x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus the complete thing 3, x minus 1, x minus 2 minus x minus 1, x minus 3 plus 5 by 2, x minus 2, x minus 3. We can find any value from this. Prasam, is this okay? Sir, f of Yes, sir. f of 1, 2, and 3 can be any value. Any value, any value, any value. Very good. Any value. Then we can plot this by our own method, right? This is one of the toughest portion we can say, right? बहुत अच्छे टफ क्वेश्चंस में इसको रेट किया जाता है, राइट? कि 5 मार्कर ही क्वेश्चन इसमें से फ्रेम किए जा सकते हैं. श्रेयज ने बोला नहीं 5 मार्कर सर. अरे नहीं, कैमरा तेरा क्यों ऑफ है? 1 मिनट. सर. ओके, यस सर. ओके एवरीवन, Yes, sir. right? So this is one of the area, right, where we can say, just ask. लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा था मुझे Which one? सर. लास्ट में जब आपने एफ एक्स करके इक्वल टू लिखा था ना, वो एंड वाला वो नहीं समझा. This one is okay. हाँ सर, ये वाला ठीक है, उसके नीचे नहीं समझा. This is fx minus this having 3 roots, right? See,
if you'll put x is equal to 1, तो ये दोनों तो वैल्यू सेम आने हैं. You'll put f is equal to 2, then these two value will be same. उसी को तो मैंने निकाला है. हाँ Right? सर समझ If you'll put x is equal to 3, then these two values will be same. So again, this will be 0. Means x minus 1, x minus 2, x minus 3 are the roots of this equation. Right. यस सर So I'm transferring this. So I'm getting this is the polynomial fx. ओके सर Right? समझा. Now, but in the simplest form, if I'll say the fx is the quadratic and when we divide fx by x plus 1, the remainder is 5. And when we divide fx by x minus 1, the remainder is 2. Find the remainder when we divide fx by x square minus 1. This is the simple one, but इसमें अब थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा. Right? तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? नहीं दिया बेटा. Leading coefficient is not given in. Okay? Right? For IOQM, which marking question? This is 2 marks. The very simple question. But later on, you'll get some flavor of this, right? But this is simpler. This is a very simple question, a straightforward question. Only the concept I have teach, that's the reason I have given this question. सर x के टर्म्स में आएगा आंसर. Yes. Very good, Raghav.
We start. Where is my answer from? -1 already. See, the question is, right, fx is the quadratic, right? And we know that fx is the any quadratic and divided by x plus 1, right? So if I'm dividing any quadratic, I'm not saying quadratic, I'm saying any of the cubic or any of the fourth power or any of the power more than 2 or equal to 2, right? When you will divide this by any linear factor, so 100% the remainder will be linear or constant. Is this okay? या तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा, राइट, व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस बाय x प्लस 1 द लीनियर फैक्टर, या तो मेरे को जीरो बचने हैं, राइट, इट्स कंप्लीटली डिविजिबल, देन रिमाइंडर विल बी जीरो, और लीस्ट वी कैन से कि इफ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, सो द लीनियर टर्म विल बी देयर, राइट? सो if I'm saying that some fx is there and we are dividing this by x minus 1, sorry, x plus 1, and some function is coming, the remainder is ax plus b. Can I say this? Yes, sir. ऐसे ही करा. Right? This is very important. Can I say this? Right? And again, I can say fx is equal to, second, we are dividing this by x minus 1. So x minus 1 into, let this is g2x, some other factor, plus the remainder is something linear, right? Cx plus d, x plus d, I don't know, right? Some remainder is coming, right? Cx plus d, right? But in our question, it is given that fx when divided by x plus 1, right? The quotient is something. And what was the remainder in this case? 5. 5. And second, fx when divided by x minus 1, what was the remainder in this case? 2. These two equations are there, right? These two equations we have. Or we can say, see, we are going through the complete, right, mathematical way for this, right? If I'll put x is equal to -1 for first, right? For x is equal to -1, f of -1, 0 plus 5, 0 into something will be 0 only. So f of -1 is 5. From this, I can say f of -1, we have 5. And second thing, what is the second one? Right? F of 1. What is the value of f of 1? F of 1 is 0 plus 2. So f of 1 is 2. So my thing is, right, what I'm saying, the question given is this. F minus 1 is 5, F1 is 2. Sir, to do this, the remainder theorem. Remainder theorem. Exactly the same thing I'm doing. remainder theorem. Yes. Exactly the same remainder theorem I'm doing, right? But now fx, can I say this? X minus 1 into x minus 2. Right, sorry. X minus 1 plus, x minus 1 plus x minus, right? So some constant is there or some g3x is there. Plus ax plus b will be the remainder. This means I'm dividing this by x square minus 1, both the factors, right? But we have two values. First is f minus 1 is 5, and second f1 is equal to, right, at -1, right? So first equation at -1, this will be minus a plus b, and this value is 5. At 1, this is a plus b, the value is 2. So from both this, b is equal to 7 by 2, right? A is equal to 2 minus 7 by 2 minus 3 by 2. So a, b are there. So fx giving you the remainder as -3 by 2x plus 7 by 2. Is this okay?
right? I have gone through the complete solution set, right? This is the complete solution set. I hope you all are understanding. You have not do complete thing, right? Directly you have to write down this. This was given, then you can proceed from this. But for understanding, this is the complete. If some polynomial is divided by cubic, the remainder will be quadratic. If some polynomial is divided by fourth degree, the remainder will be cubic, right? 1 degree less of that, right? If some polynomial is divided by cubic, right, you are getting quadratic. By quadratic, you are getting linear. By linear, you will get constant, right? So this we have to go. Okay. Done, everyone? Okay. Write down. Fx is the polynomial right? Fx is the polynomial when divided by x minus 1, remainder is 2. Divided by x minus 2, remainder is 3. Divided by x minus 3, remainder is 4. Find remainder when fx is divided. सर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल नहीं दिए. जरूरत नहीं होती बेटा. Divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3. Because only you have to go for the remainders, na? भेजा सर. Very good. Sivang, very good. Raghav, very good. Perfect and very fast. Very good. Perfect time of it. Very good. Just the basic calculation, right? And I hope everyone is getting the concept. Here is my answer. Perfect, Simil. Very good. Have taken good time. Amog, write down the answer. Satvik, very good. Abhinav, Zeel, go ahead, fast. Prasam. Akshat, basic calculation beta. Aryan. सर ओरल क्वेश्चन ही हो गया. हाँ. Shreyaj, यस सर 2 मिनट बस. fx is equal to, right, these three information we have. f1 is equal to 2, f2 is equal to 3. सर एक मिनट. Yes.
सर लीनियर आना, लीनियर तो नहीं क्या बोला, क्या बोले, क्या बोले? आया, लीनियर आया था शायद, कुछ गड़बड़ है। Okay. See, for 1, 2, 3, 2, 3, 4, right? So F1. ओके, First equation, what I'm getting is when I'm putting 1 both sides, so this will be 0, and this is A plus B plus C is 2. Then 4A plus 2B plus C. When I'm putting X is equal to 2, I'm getting 3. And then 9A plus 3B plus C is 4, right? From first to, right, सर सही है क्या? सर x+1 plus B is equal to 1. And this 5A plus B is equal to 1. Subtracting both, A is equal to 0. B is equal to 1. C is equal to 1. Right? यस सर, यही है, The remainder is X plus 1. x+1। सर मुझे क्वाड्रेटिक नहीं मिला तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? अगर पॉलिनोमियल है, मैंने 3 डिग्री से डिवाइड किया, सो दिस कुड बी क्वाड्रेटिक और लीनियर और कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जीरो भी हो सकते हैं, हाँ सर, राइट? x+1 आया था। ओके एवरीवन, राइट? सी, सो नाउ दिस इज द डिवीजन केस, राइट? ये भी एक पोर्शन होता है, राइट? बट द सिंपलर वन, राइट? द नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, when I'm giving you x plus 1 to the power 50, right? Something I'm writing x plus 1 to the power 50, x plus 2 to the power anything, right? And this x plus 1 to the power 50 is, right, if I'll expand this and I'm saying this is a naught, a1x, a2x square, and the last term this will go as a 50x to the power 50. How many terms are there in this case? 51. We are starting with x to the power 0 and maximum I can go up to 50. So very good. Total number of terms are 51, right? What type of question they will ask from this, right? First, find. First one, a0 plus a1 plus a2 up to a50. Second, a0 minus a1 plus a2 up to a50. Third, a0 plus a2 plus a4 up to a50. Fourth, a1 plus a3 plus a5. These are very simple questions. Just we have to go through once, right? But the fifth one is a little bit tricky. A50, right? This is your question, right? Coefficients. These are called coefficients. Sum of the coefficient is the first question. Second, alternatively plus minus sign, you have to write it down with the sum of the coefficient. Third, right, sum of the coefficient when even number of terms are, right? For odd number of coefficients are given, and then square of this, right? So, wow, Satvik. Okay, I thought I have to start. Satvik, सर इकट्ठे भेजना आंसर। अभी तुरंत करते हैं ना, जल्दी जल्दी हम लोग। क्या? Want to try? पहले दो तो भेज दिया, आगे का भेज। वाह, पहले 2 हो गए तो 4 तो ऐसे ही हो गए। हाँ सर, वही कर रहा हूँ। पहले 2 तो हो गए, वाह वाह। If you know, then it's very good, right? If you don't know, right, we'll do that. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट्स के सम का फॉर्मूला होता है। कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैंने उसका नहीं यूज किया बेटा, मैंने बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन यहाँ यूज करने बोल रहा हूँ। क्या करना है सब लोग सुन ही भी लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? सी व्हाट यू नीड, राइट? मुझे चाहिए सबका सम। सो I'll get the sum when put x is equal to 1. बोल सकता हूँ? If you put x is equal to 1 both side,
सो ये तो पूरा सम ही आ जाएगा जो चाहिए मेरे को, A0 प्लस A1 प्लस Yes, A2 sir. प्लस A3, राइट. सो आई एम गेटिंग दैट. अब सेकंड वाले में मेरे को चाहिए, राइट, व्हाट वी रिक्वायर्ड. So we can put x is equals to -1. वेरी गुड. पुट x इज इक्वल टू -1 ऑन दिस, राइट. थर्ड फोर्थ खुद से करो, फिर फोर्थ फिफ्थ पे जाऊं. फर्स्ट सेकंड इज क्लियर एवरीवन. एंड ये मैंने कोई इसके बाइनोमियल के लिए नहीं बताया है, ये मैंने किसी भी कोफिशिएंट के लिए बताया है. और ये केवल दो टर्म बाई नहीं है, बाई की जगह पर ट्राइनोमियल रहे, मल्टीनोमियल रहे, उसके लिए भी है. बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स एक्सपेंशन, ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स पॉलिनोमियल्स, राइट. पॉली मीन्स कितने भी डिग्री हो, कितने भी कोफिशिएंट हो, मुझे कुछ नहीं, मुझे जब भी चाहिए सम, पुट x इक्वल टू 1. दो वेरिएबल है, पुट x और y, दो वेरिएबल है एक्स वाई, दोनों को 1 पुट कर दो, राइट. अगर मेरे को चाहिए तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, मैं तीनों को पुट कर दूं 1, राइट. अभी आऊंगा सब पे ना, स्टार्टिंग विद दिस. तो सारे भेज दिए. वेरी गुड. अगर उन्होंने तो कमाल कर दिया. वाह सुनील, वेरी गुड. रिद्धिमा वेरी गुड. वो थर्ड वन ना रिद्धिमा. Sir. थर्ड एंड फोर्थ, ओके. अच्छा अच्छा. Just the first, second, and third one. ओके. वेरी गुड सिमिल. अभिनव, अक्षय, नुस्खा, जील, इज दिस ओके बेटा? उजान, Yes, sir, Saurabh. वेरी गुड. आर्यन, शिवांग, दिस इज सिंपल वन. Yes, sir. ईशा, ओम, धवल, just you have to put the values, right? But fifth wala I can't understand. हाँ, फिफ्थ वाला is little bit tricky one. तो मेरा फिफ्थ वाला ठीक है क्या? हाँ ठीक. तो wow. Not bad. But what is the value of this one, Ridhima? Calculate that value. Take out 2 to the power 49 common. सर कुछ भेजा. हाँ परफेक्ट. एक सेकंड वाला भूल गया. सर हाँ फिफ्थ. लिखा है ना. हाँ सेकंड पे तो लिखा है. वेरी गुड. तो फिफ्थ वाला आप जरा नीचे कर सकते हो क्या, दिख नहीं रहा. हाँ सर. फिफ्थ वाला थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, उसके अलावा सब सिंपल है. उजान वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. So first at 1, if I'll add first and second, we'll get this one, but 2 times, right? 2 times, so this is 2 to the power 50 by 2, that's 2 to the power 49, right? Then this one, if we'll subtract both this, right, this is 2 to the power 50 by 2, that's 2 to the power 49. Okay. Okay. See, now the fifth. Raghav. This is plus 1 to the power 50. This was given A0 plus A1x plus A2x square up to A50x to the power 50. ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, इस पर मैं कुछ और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट पहले इसे. राघव, सर प्लीज. सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे हर एक टर्म आएगा 50 चूज 0, 50 चूज 1, 50 चूज 2, सो ऑन. तब होल स्क्वायर करेंगे तो 50 चूज 0 द होल स्क्वायर, 50 चूज 1 द होल स्क्वायर, और ऐसे आएगा. अब हमें पता है कि कोई भी हम 50 चूज अगर हम k करें, 50 चूज k द 50 चूज k होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50 चूज k इंटू 50 choose 50 minus k, which is just equal to choosing from 100 we are choosing 50. Very good. This is 100. Applying combinatorics in this. Right? Not bad. Very good. Perfect. So see,
like I'll go with this only. Like first method is this one only, right? What Raghav is saying is, sir, ये तो बहुत simple है ना. See, this is 1 plus x to the power 50. And we know that the binomial expansion of this is 50c naught plus 50c1x up to 50c50x to the power 50. Right. This is given. Right. And what we have to find? We have to find 50c naught square plus 50c1 square up to 50c50 square. Or more precisely, I can say this is 50cr into 50cr. Right. Every term is something like this. 50cr into 50cr, every term is going. Though then I can write down summation of this r is equal to 0 to 50. Right. This is written. Right. Okay. Okay, everyone. What is the meaning of 50cr? Anyone can explain in mathematical term. What is the meaning of 50cr? Plus 50 factorial upon. Mathematical term means in the expansion of 1 plus x to the power 50, we have to choose x to the power r, coefficient of x to the power r. Right. And same this, in the expansion of 1 plus x to the power 50, we have to choose x to the power r. Right. यही मेरे को लिखने, यही है मेरे पास. Right. Okay. Okay. Now, can you see this? This is given. 1 plus x to the power 50, we have to find x to the power r coefficient, x to the power r coefficient. See this carefully. Na? मैं एक practical example दिखाता हूँ. Right? There are two rooms. दो classroom है मेरे पास. Right? Let this is A, this is B. इसमें मेरे पास 1, 2, 3, 4, 50 स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पर भी मेरे पास 50 स्टूडेंट्स. राइट. एंड 50 स्टूडेंट में मेरे को क्या करना है? राइट. मेरे को क्या करना है कि मेरे को दोनों राइट जगह से कुछ कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं इन सच वे कि दोनों मिला के 50 हो जाए. बोल सकता हूं मेरे को ऐसा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन क्या गिवन था? क्वेश्चन वॉज 50cr इंटू 50cr. एकदम ध्यान से समझना, शायद हो सकता है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में हमारी जान बच जाएगी. राइट. 50cr इंटू 50cr. बट मैथमेटिकली वी नो दैट 50cr और 50cr की वैल्यूज, ये 50cr, ये दिस इज इक्वल 50cr एंड 50c50 माइनस r बोथ आर इक्वल. राइट. ये तो सेम ही वैल्यूज होती है. राइट. इधर मैं चूज कर रहा हूं या रिजेक्ट कर रहा हूं, बोथ विल गिव यू द सेम सेम आंसर. राइट. So we have to find 50cr and 50c50 minus r. Right. 50c naught means I'm saying 50c naught into 50c naught is 50c50. Second, I'm saying 50c1, 50c49 will give you the same answer. And the last, we are saying 50c50 and 50c naught will give you the same answer. Can you see this? Out of 50, you have to choose 0 student. Out of 50, you have to choose 50 student. Second case, out of 50, how many you have to choose? So 1. 1. And from next group, B group, what you have to choose? Out of 50, you have to choose 49. So what we are doing, every case, I'm finding 50 students from, like, दोनों को मिला के मेरे को 50 students select करने हैं. Is this okay? This is my question. Can I say this? Can I say this? क्या मैं बोल सकता हूँ ये बात? मेरे पास दो ग्रुप बनाए मैंने. एक ग्रुप ए मेरे पास है, एक ग्रुप बी मेरे पास है. फ्रॉम ग्रुप ए, like group A, there are 50 students, right? Group B, there are 50 students, right? I have to select 0 student from this, right? I have to select 0 student from this. So from this, I'm selecting 50. I have to select 1 student from this to 49 from this. I have to select 2 students from this, then 48 from this. And lastly, I have to select 50 from this and 0 from this. So what is the meaning of this? Every time from the classroom, I'm selecting 50 students. क्या सही है ये? Is this okay? Is this okay? Write down. Is this okay? Is this okay, everyone? Yes. So
व्हाट आई एम सेइंग कि क्या ये फालतू काम मैं कर रहा हूँ? हाँ, इससे बेटर ये नहीं है दोनों क्लासरूम को एक मान लेता हूँ, राइट? इफ बोथ द क्लासरूम इज वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 100. Very good. Out of these 100, how many students you have to choose? 50. Wow. What is the formula for that? 100. 100 C50. So this arrangement is nothing but this is 100C50. And this is not only for this. This is valid for each and every, right? Like, if I'm saying 10C naught, 20C, 20, 20C10 plus 10C1, 20C 9 plus 10C2, 20C8, right? Lastly, 10C10, 20C0, right? So see what you are doing. One classroom having 10 students, other classroom having 20 students. And from both this, how many students you have to select? Every time 10 students. So now what you'll say? What is the answer for this? 30 C10. 30 30C. C10. So this is valid for every case, right? Please note down carefully. This is obviously right. थोड़ा अलग हो जाता है. So I thought कि इसको शायद वैंडर मॉन्डे बोलते हैं. vendor model. In fact, this is binomial only. Vendor mod is when the NCR n is varying. NCR plus n plus 1 CR plus n plus 2 CR. Na? If n is variable, that's called vendor mod. Right? And उसमें बहुत अच्छे काम हुए, राइट? कुछ चाइना के मैथमेटिशियंस ने बड़े अच्छे काम किए. एंड ये बाइनोमियल जो है फर्स्ट टाइम जो रिटन फॉर्म में हम लोग को मिलता है वो पिंगलाचार्य से मिलता है, राइट? पिंगाला हैज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट, जिसको पास्कल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं. द आचार्य नेम वाज पिंगलाचार्य. अभी भी कई सारे जो रीजन्स है ना जहाँ पर कुल पूजा होता है हमारे उसमें ना, तो उसमें देखोगे मैथमेटिकल नंबर्स लिखे जाते हैं 1 2 3 4, वही पास्कल ट्रायंगल वाले नंबर्स, राइट? इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस ना, आप लोग गए हो कोई जो कुल पूजा होती है, कुल देवता का, कुल देवी की पूजा होती है ना, उसमें कच्चे मकान वगैरह होते तो उसमें वो लिखा जाता था. बट धीरे धीरे हम लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते रहते वो कल्चर थोड़ा सा डिमिनिश सर हो. मैंने भेजा व्हाट्सएप पर वो जहाँ बात कर रहे. अच्छा. आल्स मैं देखूं. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द एरिया, राइट, जहां पर राइट कोफिशिएंट्स को प्लस माइनस करने एंड मल्टीप्लिकेशन में बहुत वर्किंग, राइट? बहुत सारे कोफिशिएंट्स के वर्किंग को वी कैन हैंडल विद दिस, राइट? सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ये मैंने कोशिश की आपको थोड़े से एक अच्छे फॉर्म में क्या पॉसिबल है वो बताने की, right? But what I was saying, कि don't afraid of this, right? If I'm saying कि this is x plus 2y minus z to the power 100 is the coefficient a naught, right? a1x plus a2y and so on. And how many terms will be there, right? First you have to find how many terms are possible in this. X plus 2y minus z, right? The last term will be a, right? Whatever it is, right? X, y, and z to the power 100. Right? The last term will be something like that, right? What is the sum of coefficient? A naught plus A1 plus A2 up to the last term here. दो काम दे रहा हूं ना, एक तो सम निकालने हैं, दूसरे निकालने हैं नंबर ऑफ टर्म्स. इसमें क्या होना चाहिए?
सर जैसे इक्वल दबाया जूम का वो कैलकुलेटर हो गया। अच्छा, वाह, गुड। एआई आजकल कुछ अधिक काम कर रहा है नहीं? हाँ सर, मैंने लिखना था इज इक्वल टू सम, उसमें मैंने इक्वल टू सम जैसी स्पेस दबाया, उसने ये लिख दिया, मुझे पता नहीं था। बट मतलब पर्सनली मेरे को ना वो वाला कैलकुलेटर वाला ना बहुत मजा नहीं आता। मेरे को हमेशा फील होता है ना कि मैं मैनुअली करूँ तो दैट्स ऑलवेज गिव मी द बूस्ट, लाइक लगता है कि नहीं कुछ अच्छा किया मैंने। सर इतना बड़ा नंबर। हाँ मतलब सर कैलकुलेटर पे भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्यों। हाँ मुझे भी नहीं होता, अगर कई बार जब फिजिक्स ऐड कर रहे होते फिजिक्स हो। में, अब मैथ्स में ऐसे 3300 वो सब कैलकुलेट करना है तो वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने तो मजा नहीं आता। क्वेश्चन के फॉर्म्स ना। सर ठीक है तो ना। उसमें वेरिएबल कहाँ है यही भूल जाओगे। ओके, see, the first thing is the sum. So sum, to we know that as I said, okay, right, you have to put all the variables as 1. So this is 1 plus 2 minus 1 to the power 100. So this is 2 to the power 100. I hope very good, everyone. Right, everyone is getting. Number of terms. How many terms are there? Right, like I'm asking ki if x plus y plus z to the power n is given, so how many terms are possible in this? Take your time, everyone. Right. If possibly, if you are not getting directly, go for n is equal to 1, 2, 3, then see. Okay, what are the patterns of this? Check, Raghav, check. For this one, I'm doing first ना. एन के लिए बताना है। चलेगा उसके लिए भी, दोनों के लिए सेम थिंग विल करना. See, can I 3n? Okay. By pattern for n is equal to 1 and 2, that will work na Satwik. Uh, Yes, for 1 and 2 it will work. for 3, I have not checked. 1 and 2. the formula will be सर different. याद आ गया। याद से तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। हाँ, याद नहीं, अंडरस्टैंडिंग कुछ गड़बड़ हो सकते हैं. सर वो भी याद है, जब मैं प्रूफ भी याद। What is this k in this case? ओ सर नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे x1 x2 x3 x4। See, this x plus y plus z to the power n. What is the meaning of this? You have to divide this n into 3 parts. One is x, other is y, third is z. Means, what is the question? Means x plus y plus z is equal to n. Right? So x plus y, Pythagoras theorem. right? So we know the formula for this. याद होगा, मैंने पहले भी बताया था. n plus 3 minus 1, 3 minus 1. So n plus 2c. So this will be n plus 2 into n plus 1 by. याद आया? हाँ Right? So number of term will be different, right? So how many terms we have to find? So you have to use this formula, right? You have to use this form. Okay, right? And the last for today, right? See this carefully. X cube minus x plus 1 is equal to 0. Find if x1, x2, and x3 are the roots of this equation. Find x1 to the power 5 plus x2 to the power 5 plus x3 to the power 5. Find value.
सर एक डाउट था, भूल गया था। बोलो ना। सर वो जो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन होता है, वो माइनस डी अपॉन ए होता है या डी अपॉन ए होता है? अभी बताता हूँ, देखो कभी भी रहे ना, केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, कभी भी ऐसा इक्वेशन रहे तो ऐसे हमेशा देखना, राइट। प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली, राइट। प्लस प्लस माइनस, रीडिंग के साथ लगाना है। लीडिंग के साथ प्लस, और फिर ऑल्टरनेटिवली जाना है। तो अगर ओके। मेरे फर्स्ट वाला जो देगा वो देगा सम ऑफ द रूट, तो समीशन ऑफ x1 या xi हो गया माइनस ऑफ b बाई ए। तो सेकंड वाला देगा प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, वो देगा c बाई ए। थर्ड वाला देगा प्रोडक्ट टेकन थ्री एट ए टाइम, माइनस डी। प्लस माइनस ऑलवेज। ओके। सर x1 टू द पावर 4, x2 टू द पावर 4, x की पावर 4 आ गया, x क्यूब भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 5। चलो, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, राइट। यहीं से मैं स्टार्ट लूंगा, राइट। एंड लेकिन कल हम लोग का ज्योमेट्री का सेशन रहेगा, राइट। एंड ज्योमेट्री के सेशन में कल मैं सर्कल्स एक थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोग को दूंगा, सर्कल पर हम लोग काम करेंगे, राइट। सो प्लीज बी केयरफुल, आप उसको हम लोग यूज करते हैं कल। ओके, राइट, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक सर केयर। मुझे ज्योमेट्री में एक डाउट है तो मैं आपको कल ही भेज दूँ, कल प्लीज क्लास आज में। ही भेज दो बेटा, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, वहीं से स्टार्ट लूंगा। किसी के भी डाउट्स वगैरह होंगे ज्योमेट्री के, प्लीज प्लीज प्लीज। कल का टाइमिंग यही रखते हैं बेटा, कल का टाइमिंग जो था 12:30 इज ओके। ज्ञान के कुछ प्रॉब्लम्स हैं 12:30 को, क्या हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं टाइमिंग, अगर सभी लोग कंफर्टेबल हों? सर उल्टा 12:30 ज़्यादा अच्छा है।